Welcome to our channel viewers in the biology 10 class. आज हम chapter number 16 man and his environment में जो next topic को discuss करेंगे that is conservation of nature. तो start करते हैं definition of conservation के साथ. Conservation means a careful protection and preservation of natural resources to prevent exploitation and destruction is called conservation of nature. It means कि natural resources को एक carefully और sustainable way से यूटिलाइज किया जाए सो विदाउट उनको डिस्ट्रक्ट या एक्सप्लॉइट किए आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व किया जाए तो उसे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. लेट्स सी व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? एनी नेचुरल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम द अर्थ व्हिच सपोर्ट लाइफ एंड आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे तमाम मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जिनको अर्थ से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और जिनके बगैर अर्थ पर लाइफ का सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. फॉर एग्जांपल ऑयल, कोल, गैस, मेटल, सैंड, सॉइल, एयर, वाटर एंड स्टोन्स. मीन्स वो तमाम फूड जो हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वगैरह खाते हैं. इसके अलावा दूसरे तमाम रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. सो इन तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को विदाउट एक्सप्लॉयट और डिस्ट्रक्ट किए केयरफुली वे से यूज करना नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की तरफ. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देखते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. These resources can be replaced naturally as these have endless supply. Renewable natural resources वो तमाम resources होते हैं जो कंज्यूम करने के साथ साथ नेचर उनको रिप्लेस करती जाती है और इनकी एंडलेस सप्लाई होती है. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी. दीज आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. उनको हम जितना भी यूटिलाइज करते जाए नेचर उनको रिप्लेस करती जाती है. फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में renewable natural resources like use of wind energy and solar energy can be seen. Next are the non-renewable resources. Non-renewable means which can't be replaced. So these resources cannot be replaced by natural means as quick as these are consumed. So we need to conserve them as their reserves are limited. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जिनको नेचर क्विक रिप्लेस नहीं कर सकती. मीन्स उनकी कंजप्शन या उनकी यूटिलाइजेशन बहुत क्विक है एज कम्पेयर टू देयर रिप्लेसमेंट. सो हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है बिकॉज हमारे पास इनके रिजर्व लिमिटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, गैस, कोल एंड मिनरल. इस डायग्राम में रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में डिफरेंस देखा जा सकता है. These are all the examples of renewable energy resources and here these are the non-renewable energy sources. Next we will discuss here the 3R principle which we need to follow for the conservation of natural resources. So what is 3R principle? To ensure sustainable use of resources in our environment there are 3R principles: R1, R2 and R3. R1 which means reduce, R2 reuse and R3 recycle. Let us see what are these 3 R's. R1 that is reduce. We should use this principle at different places in our daily life. We can save water, electricity and fuel. According to the first principle of conservation of nature that is R1, it means कि हम इन resources की utilization को reduce कर सकते हैं like water, electricity और fuel के use को. किस तरह से कर सकते हैं? नंबर 1, डोंट वेस्ट फूड एंड गिव अनयूज्ड फूड टू द पुअर पीपल. फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो अनयूज्ड फूड है उसे नीडी और पुअर पीपल को अफोर्ड करना चाहिए. देन टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल. इट मीन्स के इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल कन्वेंस और व्हीकल वी शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट to minimize the use of petroleum. Then third is off the lights and fans while leaving the room. When you are leaving the room, you should off the lights and fans to save electricity. Then number 4, turn off tap when not in use. At that time, जब आप water utilize नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे टैप को ऑफ कर देना चाहिए to save water. Then take bath with bucket instead of shower. It means के instead of using shower, बकेट में पानी को यूज करके हम पानी को जाया होने से बचा सकते. सो अकॉर्डिंग टू द R1 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ such resources like water, electricity and fuel.
नेक्स्ट चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ, दैट इज R2, व्हिच मींस रीयूज. We should reuse things like paper, plastic, glass, bags, clothes, and container at domestic level rather than being thrown. It means कि हमें डोमेस्टिक लेवल पर बहुत सारे मटेरियल जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ, बैग्स और कंटेनर्स वगैरह को रीयूज कर देना चाहिए, इसके बजाय कि हम उसे एज ए वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड कर दें. ऐसा करने से क्या होगा, एक तो पोल्यूशन में कमी होगी एंड सेकंड इन चीजों को रिसाइकल भी किया जा सकता है. वेल, इट रिड्यूसेस सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन. नंबर 2, रिसाइकलिंग ऑफ 1 ton ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज. अगर 1 टन पेपर को रिसाइकल किया जाए तो ऐसा करने से 17 ट्रीज को सेव किया जा सकता है. देन चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ, दैट इज R3, दैट इज रिसाइकल. It means plastic, glass, and paper can be recycled to decrease the volume of refuse. Like plastic, glass, paper वगैरह को recycle कर इन resources को conserve किया जा सकता है. Then there is one more principle for conservation of nature, that is R4, reforest. It means trees should be planted. Trees make our environment cool, shady, clean, and green. एज वी नो, ट्रीज हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट को कूल बनाते हैं. दे आर इम्पोर्टेंट फॉर शेड एंड दे क्लीन ओवर एनवायरमेंट एंड दे मेक ग्रीन ओवर एनवायरमेंट. सो वी कैन कंजर्व देम बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ, और गवर्नमेंट हैज फॉलोइंग प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. गवर्नमेंट लेवल पर जो प्लानिंग की गई है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, दीज आर नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. नंबर 2, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी. नंबर 3, मास अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. देन नंबर 4, सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. देन देयर इज अ रोल ऑफ WWF. नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट की तरफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. That was planned in 1992. So what was the purpose of this strategy? Number 1, for the conservation of natural resources, to improve efficiency in the use of resources. Then number 3, to promote efficiency and conservation of energy resources. इस strategy का purpose natural resources को efficiently utilize करना और इसके अलावा तमाम energy resources की conservation और efficiency को improve और promote करना था. देन चलते हैं सेकेंड प्लान की तरफ, दैट इज नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी? दिस पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड बाय द फेडरल मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एंटायर पॉपुलेशन. देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स ऑल ओवर द कंट्री. सो इस पॉलिसी को फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया था सो दैट कि तमाम पॉपुलेशन को पीने के लिए साफ पानी मिल सके. इसके अलावा जितने भी वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जा सके एंड ओवरऑल द कंट्री वाटर प्योरिफिकेशन के लिए फिल्टर्स एंड प्लांट्स लगाए जा सके. देन नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ चलते हैं, दैट इज मास अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, दैट वाज प्लान्ड इन 2006. This project has been launched by the UNDP, that is UN Division for Sustainable Development, to launch an awareness campaign for the conservation and management of water resources in Pakistan. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जितने भी वाटर के रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको कंजर्व करने के लिए और उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए इस पॉलिसी को प्लान किया गया था. देयर इज द सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. It works with the government for mass awareness and research of the conservation of natural resources in Pakistan. So, पाकिस्तान में मौजूद तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और इन नेचुरल रिसोर्सेज की रिसर्च के लिए और उसकी अवेयरनेस के लिए इस पॉलिसी को प्लान किया गया था. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ WWF फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, that is working to improve sub-watershed management and environmental awareness around Ayubia National Park. So first strategy जो है WWF की, that is पाकिस्तान में अयूबिया नेशनल पार्क की एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करना और इसके अलावा वाटर सब वाटरशेड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना सो दैट के इरोजन सेडिमेंटेशन वगैरह को रिड्यूस करके वाटर की क्वालिटी को बेटर बनाया जाए फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग, इरिगेशन
and hydropower, etc. Then number 2 is the plantation of jatropha and mangrove trees at the district ठट्टा सिंध. पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट ठट्टा सिंध में जट्रोफा और मंग्रूव ट्रीज की प्लांटेशन की जा रही है. जैसे कि जट्रोफा से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसके अलावा दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिसिनल पर्पज एंड लाइक टू ट्रीट द कैंसर एक्सेट्रा. देन नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी फॉरेस्ट कवर प्रेजेंट हैं, WWF इज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द असेसमेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट. द नंबर 4 सेविंग वेटलैंड स्काई हाई प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स. पाकिस्तान में हाई अल्टीट्यूड पे जितनी भी वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं उनको सेव और कंजर्व करने के लिए भी WWF इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. वेटलैंड हेयर मीन्स द मार्शी वाटर बॉडीज जहाँ पे पानी सीजनल या बारिश वगैरह की वजह से जमा हो जाता है. देन रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन इन हिमालय. As you know, हिमालय के जो इलाका है that is facing some serious climatic changes like habitat loss, species loss and infrastructure वगैरह, and that are threatening to the environment of Himalaya. So in climatic risk को reduce करने के लिए WWF important role play कर रहा है. Then is the Indus Basin Water Security Project. So WWF is also playing an important role for the water related issues in the air like Indus River Basin. Here in this diagram, the Ayubia National Park can be seen. Hope that you have clear understanding about the topic of conservation of nature and natural resources. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेंगू फेवर. जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.